Hi friends, let us solve this question. So 1.84 gram of a mixture of calcium carbonate and magnesium carbonate was heated to a constant weight. The constant weight of the residue was found to be 0.96 grams. Calculate the percentage composition of the mixture. And here are the given atomic weights for calcium, magnesium, carbon and oxygen. Okay. So we have to find the percentage composition of mixture. मतलब ये 1.84 ग्राम है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है एंड MgCO3 है. तो कितना परसेंट कैल्शियम कार्बोनेट है कितना परसेंट MgCO3 है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. Now here it is given, it is heated to a constant weight. So whenever carbonates are heated, generally CO2 is escaped out. CO2 is escaped. You can see सिर्फ हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, so कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, so that is CaO plus CO2. Similarly, magnesium carbonate के लिए भी यही होगा. So yes, in solution you can see on heating calcium carbonate and magnesium carbonate, one of the product CO2 escapes out. So this you have to remember. So okay, so let us see the reaction. So the reaction over here is calcium carbonate plus magnesium carbonate gives CaO plus MgO plus CO2. This is escaping out, and these two are the precipitates. And you can see the constant weight of residue was found to be 0.96 grams. Okay, so these two are the residues. So CaO का weight plus MgO का weight is 0.96 grams. So see, they have assumed the weights of the all the compounds. So if you take CaCO3 as x grams, so the weight of MgCO3 will be 1.84 minus x. Simple. because दोनों का weight क्या है, तो मिला के 1.84 है. So अगर एक x है दूसरा 1.84 minus x होगा. Common sense. Similarly over here, residue form कितना हो रहा है 0.96. So अगर calcium, if this calcium oxide is y grams, so this will be 0.96 minus y. So this is how it comes. Now you know, for all these type of questions, you can always solve it by two methods. One is, first is normal mole concept method, जो पहले बताया था मैंने. सेकेंड इज POAC. अब दोनों में डिफरेंस क्या है, कब कौन सा लगाना होता है. So always remember, whenever you solve using mole concept method, balancing of the reaction is always required, because we need to know कितने moles से कितना mole दिया, and based on that we can calculate कि कितने moles form हुए, फिर वो moles से can determine the weight and we can solve. But for POAC, balancing is not required. So that is the advantage of POAC. Your time is reduced, your time is saved, because you need not balance the equation. So you can see over here in this equation, the reaction is not balanced. You can see oxygen, there are 3 and 3 6, and over here there are 4, you can say, atoms of oxygen if you take one molecule. So let us solve this question using POAC. Now POAC means the number of atoms which are in the reactants, the number of atoms of any element. Suppose we take calcium, it will be the same atoms will be in the product side, because ये न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन है. सो देर इज नो केस ऑफ एनी एटम डिकम्पोज, एनी एटम्स गेटिंग वेस्टेड. नो, जितने एटम्स रिएक्टेंट्स में थे उतनी एटम्स प्रोडक्ट्स में होंगे. सो ये एक फैक्ट है, दिस इज यू हैव टू अग्री, दिस इज फॉर ऑल द एटम्स. सो नाउ वी अप्लाई POAC. इसका एप्लीकेशन क्या है, लेट अस सी. नाउ ओवर हियर we need to find the percentage composition of the mixture. उसके लिए we need to find the weights. ये x and y values निकालने हैं, right? So हमने x assume किया weight of calcium carbonate, ये 1.84 minus x, ये y of this, and ये 0.9 plus y. So since there are two variables, we'll require two equations. So we'll get equations by applying POAC. Now let us apply POAC for calcium atoms first. So you can also apply for oxygen atoms, but let us take calcium. So moles of calcium atoms in calcium carbonate. Now we see के reactant side में calcium atom कौन से compounds में है. So we see calcium atom से CaCO3 में, reactant side में, and product side में से CaO में है. If it is oxygen तो हमको ये लेना पड़ेगा, सब कुछ लेना पड़ेगा. Oxygen हर जगह हो रहा है, हर compound में oxygen है. So it's better if we take calcium atoms. So you can see the moles of calcium atoms in CaCO3 is equal to moles of calcium atoms in CaO. Sorry. So this is the POAC का एप्लीकेशन. ये इससे तो कैल्शियम एटम्स कंजर्व हो रहा है. अभी 1 into moles of calcium carbonate is equal to 1 into moles of calcium oxide. So what is this 1?
Now you can see the chemical formula. If you take CaCO3, CaCO3, अभी CaCO3 सपोज आपने 1 मोल आपको बनाना है, 1 मोल CaCO3 है, तो ये कैसे फॉर्म होगा? सो यू टेक 1 मोल Ca, let me change the color. Okay, so you take 1 mole Ca, 1 mole carbon and 3 oxygen atoms. So if you are making 1 mole of calcium carbonate atoms, you require 1 mole of calcium atoms, 1 mole of carbon atoms and 3 moles of oxygen atom. So CaCO3 बनेगा. Same applies to MgCO3. If you take calcium oxide, to make 1 mole of calcium oxide, you require 1 mole calcium atoms and 1 mole oxygen atoms. So yes, the chemical formula is important. क्या chemical formula है? So you can see कि एक कैल्शियम कार्बोनेट में एक कैल्शियम एटम होता है, 1 मोल. अगर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, so 1 मोल कैल्शियम एटम होगा. That's why this is 1. So मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जितना भी है उतना ही मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम होगा. एंड सेम अप्लाइज ओवर हियर, जितना मोल कैल्शियम ऑक्साइड है उतना ही मोल्स कैल्शियम एटम का होगा. अगर यहाँ पे कुछ और था, सपोज इट वुड हैव बीन Ca2, can take any other example, Na2CO3. If you take Na2CO3, तो यहाँ पे 2 into moles of Na2CO3 आता है, because 1 mole Na2CO3 में 2 mole Na atoms है. So I hope you are getting my point. Now okay, now what is moles? ये 1 into इधर है, पूरा नेगलेक्ट किया, ये भी 1 into इधर है. So this x upon 100 and y upon 56 are moles. So x upon 100 is moles of calcium carbonate, because you know moles is the weight upon the molar weight. So this 100 is a molar weight of calcium carbonate and the 56 is a molar weight of calcium oxide. And x and y are is the assumption taken by us. X is the weight of calcium carbonate and y is the weight of calcium oxide. So ये एक हमें equation मिला. This is one equation we get from applying POAC for calcium atoms. Since there are 2 variables, we'll require 2 equations. So this is one equation. Now we again apply POAC for Mg atoms. The moles of Mg in MgCO3 is equal to moles of Mg in MgO. यही तो स्टेटमेंट है POAC का. इसको अप्लाई कैसे करते हैं? सो मोल्स ऑफ MgCO3, तो 1 मोल MgCO3 में कितने एटम्स है Mg के? सो यू कैन सी 1. अच्छा, 1 into moles of MgCO3. As you can see, MgCO3 में 1 ही मोल है. Same in MgO, 1 mole of MgO contains 1 mole of Mg atoms. If कुछ और होता, if you can have said any compound Mg2F, magnesium, MgF2, sorry, MgF2 होता तो भी सेम बात होती. सो फॉरगेट दिस पार्ट. फिर वैसे ही तो मैं समझ गया, राइट? बिकॉज इसमें एक्चुअली 1 1 है, 2 3 का नहीं है, मतलब ये सिंपल है, सेम एज द नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं. सो तो लोग कंफ्यूज भी होते हैं. दिस वन इज नॉट दिस वन इज दिस वन एंड दिस वन इज के ये एक फैक्टर है. मोल्स ऑफ MgCO3 है, मोल्स ऑफ MgO, तो इसके कम रिलेटिविटी में कितने मोल्स Mg फॉर्म होंगे. तो अभी MgCO3 जितने मोल्स हो गए उतने ही मोल्स Mg है, बिकॉज केमिकल रिएक्शन ही ऐसा है, केमिकल फॉर्मूला इसका ऐसा है. सो यस, so 1 into moles of MgCO3 is equal to 1 into moles of MgO. Now what is moles of MgCO3? Weight upon atomic weight, weight upon molar weight. So this is the weight of MgCO3 taken 1.84 minus x लिया ऊपर upon 84. This is the molar weight. ये तो आप निकाल सकते हो ये चीज़ों से, just adding up simple maths. That is equal to 0.96 minus y upon 40. Now this is another equation having x and y. So 2 variables, 2 equations. This is equation 1, this is equation 2. This is equation 2. So on solving both the equations within 2 or 3 minutes, you'll get x as 1 gram and y as 0.84 grams. And this is correct because if you add x and y, it is 1.84 gram. और जो है 1.84 ग्राम मिक्सचर है. सो हमें क्या मालूम पड़ा कि 1.84 ग्राम मिक्सचर है, उसमें 1 ग्राम CaCO3 है एंड 0.84 ग्राम MgCO3 है. बिकॉज देखो हमने CaCO3 x लिया है एंड MgCO3 is 1.84 minus x, this is 1.84 minus 1.84 है. So we got, but we have to find the percentage composition. So simple. So percentage composition of CaCO3 is 1 upon जितना weight of CaCO3 upon total weight of the mixture. So 1 upon 1.84 into 100. So this comes out to 54.34. और remaining जो होगा वो पक्का MgCO3 होगा. So you can also do at 100 minus 54.34.
which comes out to be 45.66. And that's the solution. Thanks for watching the video.